So hello guys, welcome back to the channel, and I am filming this video right now. The topic for the today's video is humanities stream full detailed analysis. How is the paper for different subjects? I'll be talking about geography, political science, history, physical education and English as well. So without much ado, let's get started. Firstly, starting with geography. For geography, I would say read NCERT, treat NCERT as your Bible, because each and every question was from there. And if you have done chapter wise, you have MCQs on back of the every chapter. If you have done that as well, you're good to go, to be very honest, because every question was from there. Single line questions were there. What is India's rank in cotton growing? There was a question, similar set of question. Out of that, many questions were making out, like they gave us a table, negative India growth. You have to point out some. There were, like, if I'm not wrong, 8 to 10 questions from that set. So that was like a very, like, you can just have the marks from there. And if you're talking about dates and all, dates were there. Only 1-2 dates questions were there, but not many. World population say questions were there. I'm not saying it went there. From every part, some questions were there. It was not like a dominant section that this section holds a lot of weightage and this section holds like no weightage, right? Read NCERT, just read out everything, and do MCQs of every chapter. Back of the on every chapter back, you have MCQs question. Just solve each and every question and learn by heart. You're good to go for geography. Now, if we talk about history, history was also very easy because one of my friend was giving history's domain paper, and on history's paper, if I would have to see the difficulty level, it's out of 10 out of 9. It's very easy, I would say. On easier side, I'm just comparing. Out of 10 out of 9, it's very easy. The questions were not that hard. Some of the date questions were there, but not many. So I would say history was also good to go for. Next, if we talk about political science, the questions were from international relations, Cold War and all, and 6 to 7 dates questions were also there, right? Because there was a guy who was sitting just behind me, and he was solving that paper. So I know how was the paper and all. He was like easy tha, but if you have done, like, if you have read NCERT line by line, you're good to go for that as well. See, I'm just not saying ki aap ye kar lo and all that, because each and every set were easy and not that difficult, and all of the questions were from NCERT, right? And some weren't from NCERT. If you have done Oswal ke questions book and all, you just good to go for that. Next, if we talk about if I'm not wrong, I have talked about political science, history and geo. Now let's talk about physical education. Physical education is a common subject between arts, science and commerce. So in physical education, I was from ISC. We had the syllabus mentioned in the from the NTA side. That was all similar to ISC, right? ICSE ek hi hai. So what was the problem over there was, they mentioned this questions would come, right? But when the paper came, that was a little bit different, because questions were from CBSE, some from ISC and some from I don't know where and what. Sheldon ke questions aaye the. There were defined personality of different bases. So all of them were there, but some questions were from this and that. So that was a jumbled up thing, right? If you have time, read CBSE ka jo bhi book hai tumhare pe, read ISC thoroughly and solve Oswal questions. And NT का मॉक भी लगा लेना, क्योंकि वहाँ से भी 1-2 questions आए थे. So you'll be good to go for that as well. Lastly, but not the least, I'm going to talk about English, right? See, I have a very good strategy you can follow. जो तुम्हारी नैया पार लगा देगा basically, right? I wouldn't bluff, like मैं कुछ बोलूँगा नहीं कि ये करो, ऐसे करो, ये ले लो, वो ले लो. I'll just be very honest. I have found the strategy, and if you can follow, you will trust me. I promise you, अच्छे मार्क्स आएंगे. इंग्लिश आप फोड़ के आ जाओगे. So what is, like, जो मैंने इंग्लिश का पेपर देखा, that was very similar to exam called JIPMAT. So JIPMAT I am बोध गया जम्मू के लिए होता, जिनको नहीं पता. And अगर आप उसके मॉक्स लगा ले तो इंग्लिश के बस, I'm not talking about verbal and logic and cons. I'm just talking about verbal ability. अगर आप वो लगा लेते हो, trust me, सेम टू सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. पैराजम्बल बहुत ज़्यादा सेम है दोनों के. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पैराजम्बल तो है ही सेम, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट आरसीज भी सेम है लेजिट. ज़्यादा कुछ टफ आरसी आया नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ईजी सा आरसी बना था. एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है ग्रामर के लिए, प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करके जाना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे, क्योंकि यही दो है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं अच्छे खासे. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट वोकैब एंड ईडियम फ्रेजेस, आप बोलोगे यार ये कैसे करें, अभी तो इस पे टाइम ही नहीं है हमारे पे, हम कैसे कर सकते हैं ये. सो वेरी गुड स्ट्रैटेजी. अगर आपके पास टाइम होता ना, मैं तो बोलता आपको वर्ड पर मेड इजी
रट जाओ अच्छे से, बट आपके पास टाइम है नहीं, क्या करो मॉक्स दो। मॉक्स में जो मतलब जो वर्ड और ईडियम्स आपसे नहीं हुए, राइट इट ऑन अ पेपर, रीड इट अगैन एंड अगैन एवरी डे, एवरी सिंगल डे, क्योंकि आप रट नहीं सकते, आपको बस देखते रहना अच्छा है डेली, तो माइंड में सेटअप हो जाएगा। एंड जैसे आप पेपर अटैम्प्ट करोगे माइंड में अचानक से आएगा, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था, इसी से कुछ रिलेटेड होगा, टिक कर देता हूँ। सो दैट्स हाउ यू गो अबाउट ईडियम्स एंड आरसीज। मेरे साथ क्या हुआ था, आई रोट ईडियम्स 15-20 ईडियम्स लिखा था, एंड लकीली उनमें से 6 ईडियम्स आ गए। वाज लाइक हाय गॉड यार, सब सही हो गया। सो दैट्स हाउ यू कैन गो अबाउट ईडियम्स एंड vocab. So this is a very good strategy to follow for English, because English में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, यही स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो। एंड जिप मैट के मॉक्स लगा सकते हो, लगाओ, बिकॉज मैंने जो अज्यूम करा सिलेबस मतलब पैटर्न सेम है ओवरऑल, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं आप पे। एंड दूसरे के लगा के फ़ायदा नहीं, इंग्लिश के मेरे को कुछ रेलिवेंट नहीं लगे। ऑल्सो देयर वाज क्वेश्चन फ्रॉम what do I say, I'm not remembering para 10th की क्या क्वेश्चन था, हम 10th में नहीं पढ़ते थे क्या, यू हैव दिस क्वेश्चन कॉल, वो वर्ड तुम्हें ढूंढना है, स्माइली एंड ऑल दैट मेसोमॉर्फिक, दैट लिटरेरी डिवाइसेस एंड ऑल, राइट। सो वो भी क्वेश्चंस में थे, वो आपको जिपमैट के मॉक में नहीं मिलेंगे, वो आपको उस्वल के बुक्स में जो बुक्स आए थे ना, उसके अंदर वैसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ से वो प्रैक्टिस कर लेना। यार मैंने आपके लिए सब कुछ डिवाइड कर दिया है, आपके लिए बहुत ईजी हो गया केक वॉक। एंड ऑल्सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको और डिटेल एनालिसिस चाहिए, कहाँ से क्या कुछ आया, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप चैनल स्पेशली फॉर CUET एस्पिरेंट, ग्रुप डिस्क्रिप्शन लिंक में है, ज्वाइन करो। आप मेरे को फटाफट वहाँ टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस दूंगा। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम का नहीं देखा, आई बटन चेक करो, वहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी हमने एक वीडियो बनाया था, बंदे ने दिया था। एंड मेरे इनमें से कॉमन सब्जेक्ट 0 था, फिजिकल था एंड इंग्लिश था। सो मेरा अच्छा गया ओवरऑल। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी ज़रूर लाऊंगा थोड़े दिनों में, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर ऑगस्ट वाला थिंग एंड ऑल। ऑल्सो द व्यू लुक्स ग्रेट, राइट। शाम के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो या सो दैट वाज ऑल अबाउट दैट। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑगस्ट जो अटेम्प्ट देने वाले, फोड़ के आना पेपर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।